गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है एडिशन ऑफ 4 ट्राइब्स इन शेड्यूल्ड ट्राइब्स लिस्ट। तो यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है कि 4 ट्राइब्स जो हैं वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स की लिस्ट में डाल दिया जाएगा उन्हें। तो ये 4 जो ट्राइब्स हैं ये 5 स्टेट्स में एग्जिस्ट करती हैं: छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटका एंड उत्तर प्रदेश। ऑफ कोर्स ये ट्राइब्स बाकी स्टेट्स में भी होंगी, बट जो ये ट्राइब्स इन स्टेट्स में जो उनकी कम्युनिटी लोकेटेड है, सिर्फ उन्हीं को ही एसटी का जो है स्टेटस मिलने वाला है। तो एक हाथी कम्युनिटी है जो आपके हिमाचल प्रदेश के सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में, उनको एसटी का स्टेटस मिला है। फिर तमिलनाडु में नरी को रावण और कुरी विकर्ण, ये 2 कम्युनिटी को जो है एसटी स्टेटस मिला है। छत्तीसगढ़ में बिंझिया कम्युनिटी को जो है स्टेटस नहीं मिला है, लेकिन झारखंड ओडिशा में इनको ये एसटी का स्टेटस मिल गया। ठीक है, देखो सेम ट्राइब है, छत्तीसगढ़ में उनके पास स्टेटस नहीं मिला है, लेकिन झारखंड और ओडिशा को जो है वो स्टेटस मिला हुआ था। ठीक है, तो अब उनको छत्तीसगढ़ में भी जो है ये एसटी का स्टेटस जो है वो मिल जाएगा। सो गोंड कम्युनिटी जो है ये तो बहुत फेमस है, आपको पता है, 13 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश है, वहाँ पर उनको जो है एसटी का स्टेटस दिया गया है। और कैबिनेट ने ये भी अप्रूवल किया है कि जो बेटा कुरुबा कम्युनिटी है उनके कई बार क्या होता है कि एक ही ट्राइब के कई नाम होते हैं, अलग अलग तरह के उनके नाम होते हैं। तो उन सारे नामों को भी जो है छत्तीसगढ़ में और जो है एक ऐसी ही कर्नाटका में ट्राइब है, उनको भी जो है सारे उनके सिनोनिम्स को जो है वो एसटी स्टेटस दे दिया गया है। अब शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन इंडिया के बारे में हम थोड़ा सा वो देखते हैं। तो 2011 के सेंसस के हिसाब से 104 मिलियन जो है लोग एसटी हैं इंडिया में। 8.6% जो है शेड्यूल्ड ट्राइब्स हमारी टोटल कंट्री की पॉपुलेशन को कॉन्स्टिट्यूट करती हैं। कोई भी कम्युनिटी हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली और पुडुचेरी, इन 5 जगहों पर जो है कोई भी एसटी जो है वो कम्युनिटी का स्टेटस नहीं मिला है किसी को भी। तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स जो है 1999 में गवर्नमेंट ने बनाई थी, और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट से उसको निकाला गया था। और जो है जैसे आपका शेड्यूल कास्ट के केस में होता है, वैसे ही 3 pronged स्ट्रेटजी बनाई गई है: सोशल एम्पावरमेंट, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट और सोशल जस्टिस की। उसके बेसिस पर एससी का स्टेटस दिया जाता है। अब आर्टिकल 342 कहता है कि आपको स्पेसिफाई करना है, ट्राइबल कम्युनिटीज़ को जो है स्पेसिफाई करने की बात करता है। और इवन डीम्ड टू बी शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस भी जो है वो स्टेट और यूटी को देता है। ठीक है, तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो है वो नोटिफाई की जाती हैं हर स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी में, और वो जो आपकी शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं वो सिर्फ उसी स्टेट या यूनियन टेरिटरी में ही जो है वो उनको स्टेटस मिलता है। जैसे आपको भी बताया था मैंने कि जो है आपकी ये ऊपर लिखा है जो बिंझिया ट्राइब, इनको झारखंड उड़ीसा में तो एसटी का स्टेटस मिला हुआ था, बट छत्तीसगढ़ में सेम ट्राइब को स्टेटस नहीं मिला था, बट उनको अब वो मिल रहा है। ऐसे ही जो होता है, तो ये स्टेट लेवल पर स्टेटस मिलता है। तो ये जो है धीरे धीरे यूनियन कैबिनेट जो है ऑफ कोर्स स्टेट के रिकमेंडेशन के ऊपर जो है ये आगे और बढ़ा सकती है स्टेटस को। तो कैसे दिया जाता है स्टेटस? ऑफ कोर्स जो है कम्युनिटी का जो स्टेटस है, शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस जो है, उसके लिए कुछ स्पेसिफिकेशंस ऑफ कोर्स कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में तो नहीं मेंशन किया हुआ, लेकिन हम जनरली कुछ इंडिकेशंस देखते हैं कि क्या उनके पास उनके कोई प्रिमिटिव ट्रेट्स हैं, उनका कल्चर डिफरेंट है, जोग्राफिकली आइसोलेटेड हैं, वो आम कम्युनिटी जो है उससे कॉन्टैक्ट करने में शाये हैं, बैकवर्डनेस है, तो उसके बेसिस पर उनको शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस मिल जाता है। अब कैसे मिलता है, प्रोसेस क्या होता है? तो शुरुआत होती है स्टेट गवर्नमेंट से। स्टेट गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करती है कि ये जो है पर्टिकुलर कम्युनिटी, इनको एसटी लिस्ट में डालना चाहिए। फिर वो रिकमेंडेशन ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री को भेजती है। ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री रिव्यू करके उसको रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के पास भेजती है, जो कि फिर उसके बाद नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स को वो अप्रूवल भेजता है। उस अप्रूवल के बाद जो है एंड में कैबिनेट जो है यूनियन कैबिनेट के पास जो है वो फाइनल डिसीजन के लिए ये जाता है, और उसके बाद ही जो है एसटी का स्टेटस दिया जाता है। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लिस्टिंग सिस्टम इन सुप्रीम कोर्ट। ऑफ कोर्स पॉलिटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है और एक जनरल आपके गवर्नेंस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच ने क्रिटिसाइज़ किया है कि जो न्यू आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया लिस्टिंग सिस्टम लेकर आए हैं सुप्रीम कोर्ट में, उससे जो है जजेस को टाइम नहीं मिल पा रहा है केसेस को हेयर करने के लिए। ठीक है, तो पहले तो देखते हैं लिस्टिंग सिस्टम क्या होता है। ठीक है, तो लिस्टिंग सिस्टम एक तरह से आपको जब आप केस रजिस्टर करते हो सुप्रीम कोर्ट में, उसका सिस्टम है। तो पहले तो एक पार्टी पटिशन फाइल करती है, फिर एससी की जो रजिस्ट्री है, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है सुप्रीम कोर्ट का, वो देखता है कि क्या इसको एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कोई डिफेक्ट तो नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन पूरी है या नहीं है। और अगर डिफेक्ट होता तो उनको जनरली 28 दिन का टाइम दिया जाता है पार्टी को कि आप इसको करेक्ट करके दोबारा से फाइल करो। फिर मैटर को जो है
जब ये डिफेक्ट्स खत्म हो जाते हैं तो फिर मैटर को कोर्ट में जो है वो रजिस्टर किया जाता है, मतलब जुडिशरी जो है का ऑर्गन अब इसमें एक्टिवेट हो जाता है और फिर रजिस्ट्री के पास उसको भेजा जाता है। जब रजिस्ट्री के पास भेजा जाता है तो रजिस्ट्री उसकी वेरिफिकेशन करती है कि कहीं कोई ऐसा सिमिलर केस पहले से ही कोई पेंडिंग तो नहीं है, तो फिर मतलब ऑफ कोर्स उस पिटीशन को नहीं जो है एक्सेप्ट किया जाएगा कि आपके जैसा ही एक मैटर ऑलरेडी हमारे पास पिटीशन अवेलेबल है, तो उसको एक तरह से वीड आउट करते हैं कि मल्टीपल केसेस एक ही टॉपिक पर ना हो, ठीक है। फिर होता है वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन के बाद जो है लिस्टिंग सेक्शन के लिए मैटर को भेज दिया जाता है, जिसमें हेयरिंग डेट मिलती है, मतलब कि किस दिन आपके केस की हेयरिंग होगी वो मिलती है। तो ऑफ कोर्स फर्स्ट हेयरिंग पर जो है बेंच जो है जो हेयर कर रहा है केस को, वो एडमिट कर सकता है पिटीशन को या फिर उसको नोटिस दे सकता है पार्टी को रिस्पॉन्ड करने के लिए। तो अब कहा जाता है लॉयर्स द्वारा कि ये बहुत लंबा प्रोसीजर है, इसमें अगर हम सब कुछ स्मूथली भी चलता रहे तो भी 7 से 10 दिन लग जाते हैं रूटीन केसेस में। तो इसी को ही चेंज करने के लिए जो है चीफ जस्टिस ने जो है वो प्रोसीजर जो है वो अडॉप्ट किया था, ठीक है, ताकि जल्दी से जल्दी ये प्रोसेस हो सके। अब लिस्टिंग सिस्टम बहुत ही आर्बिट्रेरी है, इसके क्रिटिसिज्म बहुत लिखे हैं। तो ऑफ कोर्स लिस्टिंग प्रोसेस बहुत आर्बिट्रेरी है, क्योंकि आपको पता है सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत सिग्निफिकेंट बैकलॉग है केसेस का। तो कोई ऑब्जेक्टिव प्रोसेस वो अडॉप्ट नहीं करते हैं कि कौन सा केस लिस्ट किया जाएगा, कौन सा नहीं किया जाएगा। बहुत से लॉयर्स ने कहा है कि जो प्रोसेस अडॉप्ट भी किया जा रहा है लिस्टिंग के लिए बहुत आर्बिट्रेरी है, बहुत ज़्यादा डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं आपके जो ये रजिस्ट्रीज के पास, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़ के पास, कि केस रजिस्टर होगा या नहीं होगा। फिर कुछ केसेस जिनको समझ लो कि इमीडिएट रिलीफ की ज़रूरत है, उसको एक्सपीडिट करने के लिए जो है वो भी बहुत डिस्क्रिशन होती है, ठीक है। जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, वो मास्टर ऑफ कोर्ट के रोस्टर होते हैं, उनके पास फुल डिस्क्रिशन होती है कि वो कौन से केस को प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। अब बहुत ओपेक प्रोसीजर्स हैं, ठीक है। वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है हमने अभी ऊपर देखा है वो भी बहुत ओपेक है। मेंशनिंग जिसके अंदर जो है आपके जो है प्रोसेस को जो है वो अपडेट किया जाता है, वो भी प्रोसेस बहुत ओपेक है। तो इसलिए लिस्टिंग प्रोसीजर को पूरा ये क्रिटिसिज्म किया जाता है। तो अब ये न्यू लिस्टिंग सिस्टम क्या है जो हमारे न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया लेके आए हैं। तो हमारे जो लास्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे जस्टिस एन.वी. रमन, उन्होंने कहा था कि जो लिस्टिंग सिस्टम है उसको रिफॉर्म करना वो चाहते थे, बट वो टाइम नहीं दे पाए, और आने वाली जो है फ्यूचर चीफ जस्टिस उनको ये लिस्टिंग सिस्टम को स्ट्रीमलाइन करना चाहिए। तो इसीलिए ही जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है न्यू, उन्होंने जो है 2 शिफ्ट्स लगाई 30 जजेस की, जिसमें कि वो 15 डिफरेंट बेंचेस में मंडे और फ्राइडे को न्यू केसेस सुनते थे, जो कि लगभग 60 केसेस पर डे होते थे, और ट्यूसडे, वेंसडे और थर्सडे को वो ओल्ड केसेस सुनते थे, ठीक है। तो मतलब एक तरह से स्ट्रीमलाइन कर दिया कि पता होता है कि मंडे और फ्राइडे को न्यू केसेस जो है सुने जाएंगे कोर्ट में, और जो ट्यूसडे, वेंसडे और थर्सडे उसमें ओल्ड केसेस सुने जाएंगे। और इवन जो आफ्टरनून की सिटिंग्स होती हैं उसमें भी 2 जजेस की बेंच बना दी, जिसमें 30 आफ्टर नोटिस केसेस जो हैं वो असाइन किए जाने लगे। तो जो आपके जजेस हैं, जो जज के बेंच हैं, वो ये कह रहे हैं कि आप इतने सारे केसेस हमसे सुनवा रहे हो, इससे हो क्या रहा है कि जुडिशरी जो है वो एवरेज 4 मिनट से ऊपर नहीं दे पा रही है किसी भी केस को, तो जस्टिस जो है उसमें जो है वो एल्यूड रहेगा। तो ये क्रिटिसिज्म किया जा रहा है कि आप जो है बहुत ज़्यादा प्रेशर दे रहे हो, बहुत ज़्यादा केसेस जो है वो सुप्रीम कोर्ट को सुनने पड़ रहे हैं, उसकी वजह से जो है आम जो है जो केसेस को जो है जिसको ज़्यादा टाइम की ज़रूरत है वो भी नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है शून्य कैंपेन। इन्वायरमेंट के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो नीति आयोग ने रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट और रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट इंडिया के सपोर्ट के साथ शून्य कैंपेन को शुरू किया था लास्ट ईयर, तो 1 साल हो गया कंप्लीट। ये एक इनिशिएटिव है कि जीरो पोल्यूशन डिलीवरी व्हीकल्स कैसे बनाए जाएं, जो आपके स्विगी जोमेटो के जो डिलीवरी व्हीकल्स हैं, या अमेजॉन फ्लिपकार्ट के डिलीवरी व्हीकल्स हैं, जो आपके बेसिकली कंज्यूमर सेगमेंट में अर्बन डिलीवरीज के जो आपके व्हीकल्स हैं, उनको कैसे जल्दी से जल्दी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स किया जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक सेगमेंट हमारे रोड पर आ चुका है, ठीक है। तो ई कॉमर्स कंपनीज, फ्लीट एग्रीगेटर्स, इवन आपके ओला, उबर, इनके भी जो है आपके व्हीकल्स को ई व्हीकल्स करने की जो है प्लान किया जा रहा है। इन सब को जो है ऑन बोर्ड किया गया इस कैंपेन में। लगभग 130 इंडस्ट्री पार्टनर्स इसमें आ चुके हैं, और एक ऑनलाइन ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म भी बनाया जा रहा है कि देखा जा सके कि कितने व्हीकल जो हैं वो इलेक्ट्रीफाई हो चुके हैं, कितना वो किलोमीटर्स इलेक्ट्रीफाइड हो चुका है, कितनी कार्बन सेविंग्स हो रही हैं। तो ये सब जो है पूरा प्लान ये शून्य कैंपेन के अंदर नीति आयोग ने किया है, ठीक है। तो आपको पता है अर्बन फ्रेट व्हीकल जो है वो लगभग 10% ऑफ टोटल CO2 एमिशंस करते हैं इंडिया में, और ये बढ़कर लगभग 114% इसमें ग्रोथ देखने को मिलने वाली है 2030 तक। इसलिए ज़रूरी है कि इन अर्बन फ्रेट व्हीकल्स को इलेक्ट्रीफाई कर दिया जाए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एम विश्वेश्वरैया जी, ठीक है। सो ये आपके साइंस एंड टेक के लिए भी इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, तो इंडिया जो है वो इंजीनियर्स डे सेलिब्रेट करता है 15 सितंबर को हर साल, क्योंकि ये भारत रत्न एम विश्वेश्वरैया जी की बर्थ एनिवर्सरी होती है। तो आपको पता है वो 1861 में बॉर्न हुए थे। बहुत सारे उन्होंने टेक्निकल प्रोजेक्ट्स जो हैं हैदराबाद, मैसूर, महाराष्ट्र और उड़ीसा में किए। पूना कॉलेज ऑफ साइंस से उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की थी। मैसूर सर्विस उन्होंने ज्वाइन की एज चीफ इंजीनियर, और बाद में वो इवन 19th दीवान ऑफ मैसूर भी बने थे। 1955 में उनको भारत रत्न मिला, और उन्होंने एक इंस्टीट्यूट भी एस्टेब्लिश किया था, सर जयाचम राजेंद्र ऑक्यूपेशनल इंस्टीट्यूट इन बेंगलोर। और ऑफ कोर्स ये स्पेशल ट्रेनिंग देता है टेक्नीशियंस को, ताकि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया जो है उसको पे ध्यान रखा जा सके। उनकी कुछ बुक्स भी मेंशन की गई हैं यहाँ पे, जैसे रिकंस्ट्रक्टिंग इंडिया, प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। ये 1920 और 1934 में पब्लिश हुई थी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी। सो ये आपके सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपको पता है 15 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी मनाया जाता है। तो आपको पता है कि 80, अब ये इस साल का जो थीम है वो यहाँ पर मेंशन किया गया है, इंपॉर्टेंस ऑफ मीडिया फ्रीडम्स। ठीक है, तो मीडिया की फ्रीडम के ऊपर इस बार जो है वो थीम जो है वो मेंशन किया गया। अब इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी है क्या? तो 2007 में एक रेजोल्यूशन पास किया गया था यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली द्वारा। उसके बेसिस पर सितंबर 15 को इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी जो है वो जो है बनाया गया। ठीक है, तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन डेमोक्रेसी जो है 1997 में अडॉप्ट की गई थी बाय इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन, जो कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ऑफ नेशनल पार्लियामेंट्स। फिर कतर जो है आपके जो कंट्री है, उन्होंने एफर्ट्स जो है वो लॉन्च किए, और इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी को प्रमोट करने के लिए उन्होंने 2007 में रेजोल्यूशन लेकर आए, और यूएनजीए ने उस रेजोल्यूशन को अडॉप्ट किया, यूनाइटेड नेशंस ने, और सारी गवर्नमेंट्स जो है उन्होंने कहा कि हम इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी मनाएंगे। ठीक है, तो यार अब देखो, ये बहुत ही, कोई गैस कर सकता है क्या कि आप कतर जो है, एक जो खुद एक मोनार्की है, जो किंग द्वारा लेड जहाँ पर गवर्नमेंट है, वो एक डेमोक्रेसी के ऊपर एक रेजोल्यूशन लेकर आएंगे और इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी मनाया जाएगा। ठीक है, सो एनीवेज नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंडो पैसिफिक ट्राइलैटरल डेवलपमेंट कोऑपरेशन। तो इंडिया और फ्रांस के बीच में एग्रीमेंट हुआ है कि वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लेकर आएंगे इंडो पैसिफिक रीजन में, और खासकर जैसे भूटान, पपुआ न्यू गिनी और सेनेगल, यहाँ पर ये प्रोजेक्ट्स जो हैं वो आइडेंटिफाई कर लिए गए हैं। और यहाँ पर ये इंडियन इनोवेशंस और स्टार्टअप्स जो है अपनी रेलेवेंस दिखा पाएंगे। इवन इंटरनेशनल सोलर अलायंस को भी मौका दिया जाएगा कि कैसे वो यहाँ पर प्रोजेक्ट्स लेके आ सकते हैं। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप। तो ये आपके स्पोर्ट्स का जो है वो आपका गवर्नेंस से रिलेटेड भी हो सकता है, आपके इकोनॉमी से भी रिलेटेड हो सकता है। तो यूनियन कैबिनेट जो है उन्होंने गारंटी साइन कर ली है, क्योंकि इंडिया जो है वो फीफा अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप होस्ट करने वाला है। तो ये आपके अक्टूबर में होने वाला है वर्ल्ड कप। ये 2 साल में एक बार होता है, और पहली बार ऐसा होगा कि इंडिया में इसको होस्ट किया जाएगा। सबसे पहली बार 2008 में हुआ था, और जनरली आपके इवन नंबर के जो साल होते हैं उनमें इसको जो है वो कंडक्ट किया जाता है। तो इससे पिछला जो यूरुग्वे में हुआ है वो 6th एडिशन ऑफ द वर्ल्ड कप था, विमेन वर्ल्ड कप, और उस टाइम पर स्पेन जो है वो चैम्पियन था। इस बार जो है 7th एडिशन जो है टूर्नामेंट का वो इंडिया में हो रहा है, ऑफ कोर्स अक्टूबर में, और इसमें 16 टीम्स पार्टिसिपेट करने वाली हैं, इंक्लूडिंग इंडिया। So now let us see all these topics in English. So the first topic is addition of 4 tribes in ST list. So Union Cabinet has recently given approval to the addition of 4 tribes to the list of scheduled tribes. So this topic is of course important for your governance and social issues also. So Union Cabinet has recently approved the inclusion of these 4 tribes into 5 states. So you know that certain tribes, they may be categorized as scheduled tribes in one state, but the same tribe may not have the benefit of scheduled tribe in another state. Okay, we'll give you an example also later. So which tribes are being included now? So Hathi community belonging to Sirmaur district of Himachal Pradesh have been given the ST status. Nari Koravan and Kuri Vikran community have also been given the ST status from Tamil Nadu. Binjia tribe was listed already as in Jharkhand and Odisha as ST, but they were not listed as ST in Chhattisgarh, but now they will be included in Chhattisgarh also. So Gond community residing in 13 districts of Uttar Pradesh have also been given the ST status. So there are certain tribes which have parallel names, like
they are same tribe, but they are known by other names in certain districts and certain other states. So almost 11 such tribes have been identified in Chhattisgarh, and one such tribe has been identified in Karnataka, and they have also been included in the ST list with all their synonyms. So, what is the status of scheduled tribes in India? So, as per the 2011 census, 104 million scheduled tribes. There is 104 million population of scheduled tribes in India, which means almost 8.6% of country's population is scheduled tribes. But no community has been specified as scheduled tribe in the states of Haryana and Punjab and the UTs of Chandigarh, Delhi, and Puducherry. So, Government of India set up the Ministry of Tribal Affairs in 1999 after bifurcating the Ministry of Social Justice and Empowerment. So, like in the case of scheduled caste, the government wants to adopt a three-pronged strategy for their development, like social empowerment, economic empowerment, and social justice. So what are the what is the list of what are the scheduled tribes? So as per the article 342 of the constitution, the tribal communities can be specified as scheduled tribes, or they can also be specified as deemed to be scheduled tribes in relation to a state or UT. Like I was telling you earlier, that one tribe can be a scheduled tribe in one state but not in the other. So list of scheduled tribes is notified for each state or union territory, and this list is valid only within the jurisdiction of that state and union territory and not outside. So basically it's an ongoing process. Once you get once, let's suppose there is a tribe called A, it gets an ST status in one state, but then of course it may not get the same status in other states. So basically it's an ongoing process. It goes ahead with time. So what is the procedure? How does a scheduled tribe, how does a community gets a scheduled tribe status? So actually the specification of a community as a scheduled tribe is based upon certain criteria, like if they have primitive traits, they have a distinctive culture, they are geographically isolated, they have any shyness of contact with the community at large, and they have any backwardness also. So of course this criteria is not spelled out in the constitution, but this has been observed as the larger picture, has been observed in the larger picture. So what is the process of inclusion? So first, the state government would identify it, and then it would recommend it to the Tribal Affairs Ministry, Union Tribal Affairs Ministry, which would then send it to the proposal to Registrar General of India, which would then later submit it to the National Commission for Scheduled Tribes, and only after that the list is sent to the Cabinet for a final decision. So the next topic is listing system in Supreme Court. So this topic is important for governance section. So a Supreme Court bench has criticized the new case listing system that has been introduced by the new Chief Justice of India. This bench is claiming that it gives judges insufficient time to hear cases. So what is the listing system? You know that when you file a case in the Supreme Court, it does not you do not get hearing from the Supreme Court immediately. So it's a procedure. First you file a petition in the Supreme Court, either physically or online. Then the SC registry, that is the administrative side of the Supreme Court, would examine the documents or the petition, and if in the case of any defect, they would ask you to correct it within 28 days. And once the defects are corrected, the matter is registered before the court and the party gets a petition number. So if the case is sent to registry for verification, then the registry examines it and looks if there is any similar case pending before the Supreme Court. If there are certain such similar cases, then the registry may not verify it and return the petition saying that we already have such cases and you do not need to file a separate petition. Only if the verification is done, then the listing section comes. Then once the listing is done, then the hearing date would be given to the petition or the party, a party who has filed the petition. Once they have admitted this petition, notice is issued to the opposing party to respond, and the entire process takes about 7 to 10 days in routine cases, if there is no defect or any issue with the petition. So it was a very cumbersome procedure. So this is the criticism of the listing system, the old listing system. So Supreme Court
already has a significant backlog of cases. So there was no objective criteria to determine which case should be listed and when a case should be listed. So many lawyers and even judges were complaining that the process is arbitrary. We need a new process for that. So, like there was another criticism that there are certain times when the parties require immediate relief from the Supreme Court, and the it means that the process should be expedited. But because CGI is the master of the court's roster, he had full discretion over the cases, which cases have to be listed and which cases have to be prioritized. So basically, this entire process was very opaque, and the even the verification and mentioning of cases was very opaque. So that's why, the last Chief Justice of India, the Justice N.V. Raman, also admitted in that he could not devote much attention to this problem of listing. So he suggested that future Chief Justices must address this issue. That's why the current Chief Justice of India, Justice Lalit Ji, had pledged to streamline this case listing. So as per the new procedure, the Mondays and Fridays are earmarked for newly filed cases. So almost 60 cases each day come to the Supreme Court, new cases, and Tuesdays, Wednesdays, and Thursdays are earmarked for hearing of old cases in the morning session, and in the afternoon session also 30 old cases are also dealt by the Supreme Court within 120 minutes. So it means that at average, the Supreme Court can allot just 4 minutes of judicial attention per case. So this is what is being said. The judges are saying that this new procedure is giving them little time to hear the cases, even if they are important cases. So the next topic is Shunya campaign. So this topic is important for your environment section. So Niti Aayog, along with Rocky Mountain Institute and Rocky Mountain Institute India's support, they had launched the Shunya campaign, which is an initiative to promote zero pollution delivery vehicles in India. So it was launched last year on this very date, and this year marks the first anniversary of this campaign. Initially, it was launched with just partnership of 30 companies, but now it has grown up to 130 industry partners. E-commerce companies, fleet aggregators, logistic companies, they have been onboarded that they should replace their petroleum vehicles or the fossil fuel based vehicles, and they should adopt electronic vehicles because they constitute almost 10% of the total vehicle fleet on the road. So urban delivery segment has been accommodated, and a certification program has also been launched under this campaign. An online tracking platform has also been launched, so that we can see how many vehicle kilometers have been electrified, how much carbon savings have been done. So basically, it is meant to motivate these companies that they should adopt the electric vehicles. So you know that urban freight vehicles account for almost 10% of freight transportation. They all transportation related CO2 emissions, and this CO2 emissions is expected to grow by 114% by 2030. That's why a campaign like Shunya campaign was necessary. So the next topic is M. Vishveshwaraya Ji. So this topic is important for your science and tech section. So India celebrates Engineers Day on the 15th of September each year. So we celebrated to mark the birth anniversary of Bharat Ratna M. Vishveshwaraya Ji. So he was born in 1861, and he made several contributions to the projects in Hyderabad, Mysore, Maharashtra, and Odisha. He studied or he completed his engineering from the Pune College of Science. He joined the Mysore service as the chief engineer, and later he was also assumed the position of 19th Diwan of Mysore also. So in 1955 he was awarded the Bharat Ratna. He also established Sir Jayacham Rajendra Occupational Institute in Bangalore, and some of his books have been mentioned here: Reconstructing India and Planned Economy of India, which were published in 1920 and 1934 respectively.
So the next topic is International Day of Democracy. This topic is important for your social issues. So International Day of Democracy is also observed on the 15th of September. So this year the theme is revolving around media freedoms, and that's why this information is given that 85% of world's population is experiencing a decline in press freedoms in their country in the past 5 years. So this International Day of Democracy was basically established in 2007 after the resolution passed by the United Nations General Assembly. So Universal Declaration on Democracy was adopted in 1997 by the Inter-Parliamentary Union, which is an international organization of national parliaments. So later on, Qatar is the country, of course. It led certain efforts to promote an International Day of Democracy. Based upon such efforts, in 2007, the United Nations General Assembly adopted by consensus this resolution, and International Day of Democracy was proclaimed. So the next topic is Indo-Pacific Trilateral Development Cooperation. So this topic is important for international relations. So External Affairs Minister has said that India and France have agreed to work upon an Indo-Pacific Trilateral Development Cooperation, which will facilitate development projects in the Indo-Pacific region, especially within the framework of International Solar Alliance would also come ahead. And Indian innovators and startups would also demonstrate their relevance in this Indo-Pacific countries. Certain projects have already been identified in Bhutan, Papua New Guinea, and Senegal. So the next topic is FIFA Under 17 Women's World Cup. So this topic is important for your governance section and your economy section also. So Union Cabinet has approved the signing of guarantees for hosting of Federation Internationale de Football Association FIFA Under 17 Women's World Cup in India. You know that it is scheduled to be held between 11th October to 30th October 2022. It's a biennial youth tournament, which means it happens once in 2 years, and generally it is held in even number years. It started in 2008, and the last event was the 6th edition of the event, which was held in Uruguay. At that time, Spain became the champion of this World Cup. This time it will be the 7th edition, and 16 teams will be participating in this World Cup, including India. So these were our topics for today. Please also download the weekly current affairs compilation from our Telegram group also. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.